हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे some practical guidelines that how to use Kent Repertory. First point, desire and aversion of food should be referred to in chapter stomach. Food disagrees, intolerance to food should be referred under generalities or also under stomach disorder. All conditions of general modalities, effect of discharges, weather, etc. should be referred under generalities. The symptoms of neck should be referred into chapter external throat and can also be referred in back cervical region. Diagnostic rubrics should be referred to in the part concerned and in generalities. Sweat on any special part is found under the anatomical section in which the part is located. For example, अगर हमें फेस पे पर्सपिरेशन देखना है तो फेस चैप्टर में जाके पर्सपिरेशन रूब्रिक मिलेगा। अगर हमें हैंड या लेग्स पे देखना है तो एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में मिलेगा। अगर हमें चेस्ट पे देखना है तो वो चेस्ट चैप्टर में मिलेगा। 7th, any desire or aversion at mental level should be referred to as things desire aversion to. For example, for company desire we will see aversion for desire for work aversion to mental or physical work. Next, grading of clinical rubrics. The grading of clinical rubrics can be based on how often the clinical symptoms or conditions yields to a certain remedy. तो हम ग्रेडेशन ऑफ रेमेडी जब प्लान एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे कैंट का तो उसमें भी देखे थे कि किस बेसिस पे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड क्लासिफिकेशन किया गया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इफ द सिम्टम्स और कंडीशन yields very often in almost all the patients, then it is under first grade remedy. If the clinical condition yields sometimes but not in all cases, then medicine is placed under second grade remedy. If the clinical symptoms or condition yields to the remedy, then the remedy is placed under third grade. Next point, the classification of hot and chilly remedies is mainly based on general aggravation, general amelioration. For this purpose, one can refer to cold in general aggravation for chilly patients, cold becoming amelioration for hot patient, heat vital lack of for chilly patients. तो हॉट और चिली का कुछ ऐसा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन केंट ने नहीं दिया है, तो इसीलिए हमें अलग अलग रूब्रिक्स को लेके एंड में किसी केस टेकिंग के एंड में पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ऐसे रूब्रिक्स लेने पड़ते हैं। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। एज पर डॉक्टर आर.पी. पटेल, नंबर ऑफ मेडिसिन इन कैंट is 657. There is over generalization in mind section and over particularization in extremities section. No definite single rubric is for hot and chilly patient. Nosodes are found scattered and total number of nosodes used by Kent is 15. That's all for today. Thank you. Please like, share and subscribe the channel to get more such videos.